हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू सीआरएम आईएएस। मेरा नाम डॉक्टर सलोनी शर्मा है और मैं जुड़ चुकी हूँ आपके साथ पीआईबी न्यूज़ एनालिसिस के लिए। तो मंथ बाय मंथ हम लोग न्यूज़ एनालिसिस करेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम मई 2025 ऑनवर्ड्स टिल डेट। टिल नाउ जितने भी पर मंथ न्यूज़ आर्टिकल्स पीआईबी में इंपॉर्टेंट होंगे वो कवर करेंगे यूपीएससी पर्सपेक्टिव से। बिकॉज इस बार का पेपर दिखा है प्रीलिम्स का, तो पीआईबी के क्वेश्चन थे डायरेक्ट। So to get hold of those questions, we are starting this session. ठीक है, मंथ बाय मंथ हम लोग कवर करेंगे और इसकी जो पीडीएफ होगी वो आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड हो जाएगी। तो विल स्टार्ट विद मई 2025। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं, 4 आर्टिकल्स मैंने कवर किए हैं आज के सेशन में। फर्स्ट इज योर ऑपरेशन सिंदूर विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। सेकेंड इज योर इंडिया एंड यूके में जो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट हुआ है उसके बारे में। थर्ड इज योर पीएम जनमन। फोर्थ इज योर जनमन इज अ स्कीम रिलेटेड टू योर ट्राइबल सेक्शंस। एंड फोर्थ इज योर नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। ठीक है, ये सारे आर्टिकल्स कवर करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर आपका आ जाएगा सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट योर दिस सेकंड टॉपिक इंडिया यूके एफटीए विल बी important from economics point of view. Third topic PM Janman is from the scheme section, also important from your social issues point of view. Then you have fourth topic national green hydrogen mission, ये आ जाएगा आपका साइंस एंड टेक में। तो ये 4 टॉपिक्स डिटेल में कवर करेंगे, इसके साथ में इसके प्रीलिम्स और मेंस रिलेटेड क्वेश्चंस भी कवर करेंगे जहां जहां रेलेवेंट हो। ओके, so let's start with the first topic for the day, that is your operation Sindoor. मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने पब्लिश किया है ये आर्टिकल पीआईबी में। ठीक है, इट केम ऑन 18th of May 2025। यू नो, ऑपरेशन सिंदूर स्टार्टेड विद पाकिस्तान। इंडिया का बैटल रहा था पाकिस्तान के साथ में, कुछ skirmishes हुए थे, उसके रिस्पेक्ट में ये आर्टिकल कवर किया गया है। ठीक है, सो पीआईबी क्या कह रहा है, ऑपरेशन सिंदूर फोर्जिंग वन फोर्स। इंडिया के तीनों फोर्सेस ने यूनिसन में काम करके दे बिहेव्ड एज वन फोर्स। So the article stands as the synergy of India's armed forces. Synergy होता है यूनिसन में कैसे उन्होंने काम किया, साथ में मिलके कैसे काम किया। ठीक है, so let's read what the PIB has written. In an age of multi-domain warfare where threats evolve faster than borders shift, India's national security architecture has demonstrated the strength of jointness and strategic foresight. ऑपरेशन सिंदूर इनिशिएट कब हुआ था? मई 7 2025। दिस बिकम्स एन इम्पोर्टेंट डेट। मई 7 2025 को ये स्टार्ट हुआ था। एंड क्यों स्टार्ट हुआ था, इसका रीजन है इन द आफ्टरमैथ ऑफ पहलगाम टेरर अटैक। पहलगाम अटैक हुआ था अप्रैल में। ठीक है, उसके रिस्पेक्ट में ये अटैक किया गया था इंडिया के इन मई। मई 7 2025 को ये स्टार्ट हुआ था ऑपरेशन। Now, Pahalgam terror attack क्या था? Pahalgam terror attack claimed the lives of 26 innocent civilians. Showcased now Operation Sindoor के बारे में बात की है। Showcased a calibrated tri-services response. Tri-services response मतलब हमारी तीनों forces उसमें involved थी, Army, Navy and Air Force, all three were involved. That embodied precision, professionalism and purpose. ये सब चीजें उन्होंने embody की। ऑपरेशन सिंदूर was conceived as a punitive and targeted campaign. Punitive था मतलब कि पनिशमेंट के तौर पे इसको यूज किया गया था, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से पहले अटैक्स हुए थे इंडिया पे, टेरर अटैक्स किए गए थे ऑन इनोसेंट सिटीजन्स। उसको जवाब देने के लिए इंडिया लॉन्च दिस प्यूनिटिव अटैक्स। प्यूनिटिव होता है पाकिस्तान को पनिश करने के लिए। And they were targeted campaign to dismantle the terror infrastructure across the line of control and deeper inside Pakistan. Line of control के beyond किए गए थे ये attacks. Okay? So this was the logo of Operation Sindoor. This was a multi-agency intelligence provided confirmation of 9 major camps that were eventually targeted in the operation. तो इंडियन फोर्सेस ने कौन से कैंप्स टारगेट किए थे, कितने कैंप्स टारगेट किए थे? मेनली देयर वर 9 मेजर कैंप्स दोज वर टारगेटेड बाय इंडियन फोर्सेस. India's retaliatory action was based on meticulous planning and intelligence-led approach. This is important from Main's point of view. You can quote these things, which ensured that the operations were conducted with minimum collateral damage. Collateral damage minimum रखा था कि कोई भी civilian population उनकी damage ना हो उन पे. Operational ethics were central to the mission and restraint was exercised to avoid civilian harm. सिविलियन हार्म नहीं होने दिया था, वहाँ के पाकिस्तान के सिविलियंस को हार्म नहीं पहुंचाया गया था।
जिन कैंप्स ने अटैक किया था, जो टेररिस्ट के कैंप्स थे, मेनली 9 कैंप्स थे, उन्हीं को बेसिकली टारगेट किया गया था. 9 कैंप्स वर टारगेटेड बाय द फोर्सेस. Now, in the aftermath of Operation Sindoor, Pakistan initiated a series of retaliatory drone and UCAV attacks. जब ऑपरेशन सिंदूर इंडिया ने लॉन्च किया, नाउ पाकिस्तान ने फिर से रिटेलिएटरी अटैक स्टार्ट कर दिए. किसके थ्रू स्टार्ट किए थे? ड्रोन्स एंड यूसीएवी अटैक्स. यूसीएवी क्या होता है? अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स. बेसिकली ड्रोन जैसे ही होते हैं, ये भी कॉम्बैट के लिए काम आते हैं. ठीक है. Combat means in the purpose of attacking. They targeted key Indian air bases and logistics infrastructure. ठीक है. इंडिया के एयर बेसिस को भी टारगेट किया था और लॉजिस्टिक्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी उन्होंने टारगेट किया था. These attempts, however, were effectively neutralized by India's comprehensive and multi-layered air defense structure. अभी हम इसमें आर्टिकल में पढ़ेंगे मल्टी लेयर एयर डिफेंस स्ट्रक्चर इंडिया का कौन सा था जिसने पाकिस्तान के अटैक्स को न्यूट्रलाइज कर दिया. Central to this success was the integrated command and control strategy, ठीक है, which facilitated real-time threat identification, assessment and interception across multiple domains. तो ये सिस्टम इंपॉर्टेंट रहा था, इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रेटजी. In every single domain of Operation Sindoor, there was operational synergy between the forces and fully supported by the government, agencies and departments. तो सभी चीजों में synergy थी, सबने यूनिसन में काम किया था, गवर्नमेंट ने, एजेंसीज ने एंड वेरियस डिपार्टमेंट्स ने मिलकर काम किया था in the Operation Sindoor. Now some more points related to this. Who were the perpetrators? अटैक किसने कैरी किया था? ये वाला पाकिस्तान की तरफ से अटैक करने वाली कौन सी एजेंसी थी? तो द अटैक वाज एग्जीक्यूटेड बाय द रेजिस्टेंस फ्रंट, टीआरएफ बोलते हैं इसको, एन एक्टिव ऑफशूट ऑफ पाकिस्तान बैक्ड लश्कर तैयबा. एलईटी की फोर्सेस जिनको बैक करती है द रेजिस्टेंस फ्रंट को, उन्होंने इस चीज का बेसिकली उन्होंने अटैक किया था, वो परपेट्रेटर्स थे इस अटैक के लिए. And what was the response from the Indian side? Response was due to Pakistan's refusal to dismantle these specific proxies. India launched a swift 25-minute cross-border kinetic operation. Kinetic is a military operation launched by India ने 25 मिनट का operation था. Cross border means across the border that operation was being performed. Now next, what were the key pillars of Operation Sindoor? के key pillars देखेंगे. Basically, तीन main pillars थे Operation Sindoor के. I have listed them over here. Military और tech precision. फर्स्ट जो पिलर था वो था मिलिट्री या टेक प्रिसिशन का पिलर था कि मिलिट्री अटैक्स इंडिया ने कैरी आउट किए थे. ठीक है. सेकेंड पिलर वाज नॉन मिलिट्री एंड स्ट्रेटेजिक. इसमें बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे डिटेल्स इसकी नॉन मिलिट्री और स्ट्रेटेजिक अटैक्स कैसे थे इंडिया की तरफ से. These were basically कि इंडस वाटर ट्रीटी इंडिया ने सस्पेंड की थी, सच लाइक मेजर्स, ट्रेड सस्पेंड कर दिया था पाकिस्तान के साथ. सो दोज आर नॉन मिलिट्री अटैक्स, बेसिकली नॉन मिलिट्री एंड स्ट्रेटेजिक ऑपरेशंस. इसमें मिलिट्री का रोल नहीं था. थर्ड इज योर डॉक्ट्रिनल शिफ्ट. इंडिया की डॉक्ट्रिन में क्या शिफ्ट आया इस ऑपरेशन के बाद में. ठीक है. पहले क्या थी इंडिया की डॉक्ट्रिन एंड नाउ व्हाट इज द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडिया, वो चीज हम पढ़ेंगे. ठीक है. नाउ लेट्स रीड देम वन बाय वन. द काइनेटिक एंड टेक्नोलॉजिकल रिस्पॉन्स. पहले ये मिलिट्री रिस्पॉन्स क्या है, तो इसको मैंने पॉइंट्स में डिवाइड किया है. ये बेसिकली आपको आंसर राइटिंग फॉर्मेट में मैंने ये प्रोवाइड किया पीडीएफ, सो दैट मेंस में अगर क्वेश्चन है यू आर गुड टू गो विद दीज आंसर्स. ओके. तो द फर्स्ट पॉइंट इज ट्राई सर्विसेज की जॉइंटनेस. ये तीनों जो सर्विसेज थी उन्होंने यूनिसन में काम किया था, जॉइंटनेस में काम किया था. हैंडल्ड अंडर द सुपरविजन ऑफ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, सीडीएस की सुपरविजन में ये हुआ था. It showcased unprecedented operational synergy between Indian Army, Air Force and Navy. ये तीन हमारे सब पार्ट्स हैं इंडियन फोर्सेस के. ठीक है. तो आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी तीनों ने जॉइंटली ऑपरेट किया. सेकेंड पॉइंट इज टारगेटिंग प्रिसिशन. India's Rafale jets struck 9 major terrorist infrastructure sites. ये हमने राफेल जेट्स कहाँ से प्रोक्योर किए हैं? फ्रांस से प्रोक्योर किए गए हैं. ठीक है. अक्रॉस पाकिस्तान एंड पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जे.एंड.के without engaging Pakistani military facilities, maintaining a measured and non-escalatory posture initially. तो इनिशियली इंडिया ने पाकिस्तान की मिलिट्री फोर्सेस को एंगेज नहीं किया था. जो टेररिस्ट के कैंप्स थे, जो 9 लोकेशंस थी, मेजर लोकेशन, सिर्फ उन्हीं को टारगेट किया गया था. ठीक है. इट वाज अ मेजर्ड एंड नॉन एस्केलेटेड पोस्चर इनिशियली, मतलब कि कोई भी एस्केलेशन ना हो, इस चीज का ध्यान रखा गया था इंडिया के थ्रू. ठीक है. नेक्स्ट, लॉन्ग रेंज सैम इंटरसेप्शन. A historic executional operational deployment of the S-400 Triumph air defense missile system. Now the system is important. इसको हम लोग सुदर्शन चक्र भी बोलते हैं. S-400 Triumph air defense missile system. ठीक है. Executing a world record 314 kilometer long surface to air missile.
was a surface to air missile, basically S-400 system, against an enemy airborne early warning and controlled aircraft. तो इसकी डिटेल्स भी हम लोग पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, इस आर्टिकल में आगे जाते हैं. It has been extensively covered in detail because this is a very important topic from the point of view of examinations. Any examinations you are targeting, be it Bihar, PCS, UPPSC, UPSC, so it is a very important article for those very examinations. ठीक है. Now military sections में और क्या यूज किया था? Advanced weaponry का यूज किया था. कौन कौन सी weaponry थी? Utilize niche assets like Rafale jets, Rafale fighter jets. I told you we have procured from France. ठीक है. Equipped with French developed SCALP systems, SCALP long range cruise missile. तो ये SCALP system उसमें deployed है. SCALP की full form है, ये French में है, systematic cursor autonomial prolonged. This is not an important full form. You should know कि ये जो Rafale jets हैं ये SCALP technology पे work करते हैं. Long range cruise missiles हैं, ठीक है. हैमर सिस्टम था, हैमर प्रिसिशन बॉम्ब्स हैं. हैमर की फुल फॉर्म क्या है? हाईली एजाइल मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज. तो हैमर बॉम्ब्स भी यूज किए गए हैं इंडिया की तरफ से. एंड इंडिजिनस लॉइटरिंग म्यूनिशंस. इंडिजिनस मतलब हमने इंडिया में डेवलप किया. राफेल सिस्टम्स हमने फ्रांस से लिए हैं, ठीक है, बट ये जो लॉइटरिंग म्यूनिशंस हैं इसको हम बोलते हैं कामिकाजे ड्रोन्स. को सुसाइडल ड्रोन्स भी बोलते हैं, ठीक है. बेसिकली ये क्या होते हैं? कामिकाजे ड्रोन्स क्या होते हैं? लॉइटरिंग म्यूनिशंस मतलब ये हॉवर करते हैं आपके टारगेट के ऊपर. दिस इज सपोजिंग दिस इज द टारगेट, इट विल कम टू नो दैट दिस इज द टारगेट, रिकॉग्नाइज इट एंड वहां पे जाके पड़ जाते हैं. दिस इज नोन एज सुसाइड ड्रोन्स, कामिकाजे ड्रोन्स और लॉइटरिंग म्यूनिशंस. ये इंडिया के इंडिजिनसली डेवलप्ड है, इंडिया ने खुद डेवलप किए हैं. फॉर व्हाट पर्पस? टू बाईपास द चाइनीज सप्लाई पाकिस्तानी एयर डिफेंसेस. तो जो पाकिस्तान के पास एयर डिफेंस सिस्टम था वो चाइना ने सप्लाई किया था उनको. अब ये जो कामिकाजे ड्रोन्स है ये उसको काउंटर एक्ट करता है, उसको बाईपास कर जाता है इजीली. Okay, so these were the military force, the military measures which India took. Second part is your non-military and economic measures. Non-military और economic measures में क्या आएगा? India utilized a whole of government approach. This is important thing to economically and diplomatically choke the adversary. Economically भी choke किया है and diplomatic terms में भी choke किया है. किसको? Adversary कौन है हमारे यहाँ पे? पाकिस्तान में. ठीक है. सो बेसिकली देखते हैं हम नॉन मिलिट्री मेजर्स इंडिया की तरफ से क्या क्या लिए गए थे. फर्स्ट इज इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंशन. इंडस वाटर ट्रीटी वाज साइंड इन 1960. अब ये दिस इज अ वेरी सक्सेसफुल ट्रीटी बिटवीन बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान. इसकी सस्पेंशन आज से पहले कभी नहीं हुई है. इट वाज द फर्स्ट टाइम दैट दिस ट्रीटी वाज सस्पेंडेड बाय इंडिया. India temporarily put the 1960 treaty in abeyance. Abeyance होता है suspend कर दिया उसको, asserting that blood and water cannot flow together. तो ये प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट थी कि blood and water cannot flow together. इस वजह से हमने ये रीजन दिया था कि इंडस वाटर ट्रीटी हम सस्पेंड कर रहे हैं हम. Which significantly restricted water flows to Pakistan's agriculture reliant basins. तो पाकिस्तान के जो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट बेसिन्स हैं, जो सॉइल्स हैं, जो लैंड्स हैं, उस चीज को काफी इफेक्ट पहुंचा इस चीज से. ठीक है. सो दिस वाज हाउ इंडिया टुक इकोनॉमिक मेजर्स. उनकी पाकिस्तान की इकोनॉमी अफेक्ट होगी ना, बेसिकली अगर एग्रीकल्चर अफेक्ट होगा तो उनकी इकोनॉमी अफेक्ट होगी. सो दिस वाज अ नॉन मिलिट्री मेजर व्हिच वाज इकोनॉमिक इन नेचर. सेकंड थिंग, बॉर्डर क्लोजर. द अटारी वाघा ट्रेड रूट वाज एंटायरली सील्ड. तो जो अमृतसर में बॉर्डर है, अटारी वाघा ट्रेड रूट, दिस इज द मेन बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान जहाँ से मैक्सिमम ट्रेड कैरी आउट की जाती है. तो इस बॉर्डर को एंटायरली सील कर दिया था इंडिया ने. एंड ऑल बायलैटरल ट्रेड इंक्लूडिंग इंपोर्ट्स ऑफ सीमेंट, टेक्सटाइल एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ क्रिटिकल फूड गुड्स लाइक अनियंस वाज कंप्लीटली बैन. तो ये सब चीजों का इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट वाज बैन. ठीक है. अटारी वाघा बॉर्डर वाज क्लोज्ड. थर्ड थिंग इंडिया ने क्या किया था? कल्चरल एंड डिप्लोमेटिक आइसोलेशन. कैसे की थी? बैंड ऑल पाकिस्तानी आर्टिस्ट फ्रॉम इंडियन स्ट्रीमिंग एंड लाइव प्लेटफॉर्म्स, रिवोक्ड visas and discontinued travel under the SARC visa exemption scheme. तो ये सब चीजें भी इंडिया ने अडॉप्ट की थी. उनके जो परफॉर्मर्स थे उनको इंडिया में आने से मना कर दिया गया था क्योंकि वीजाज उनके डिसकंटिन्यू किए थे. एंड दे आल्सो डिसकंटिन्यू द ट्रैवल अंडर सार्क वीजा एक्सपेंशन स्कीम. सार्क कंट्रीज कौन सी है? साउथ एशियन कंट्रीज हैं बेसिकली. उनका एक ग्रुप है सार्क कंट्रीज का, वो वाले वीजा को भी एग्जेम्प्ट कर दिया था उस टाइम के लिए. So these were the diplomatic and economic measures which were non-military in nature. थर्ड थिंग हम आते हैं मल्टी डोमेन वॉरफेयर एलिमेंट्स. अब कौन कौन से मल्टी डोमेन वॉरफेयर एलिमेंट्स यूज किए गए थे?
स्पेस डोमिनेंस emphasize a critical reliance on military space assets using इंडिया की तरफ से यूज किए गए थे GSAT-7 कम्युनिकेशन सैटेलाइट यूज की थी एंड आईएसआर क्या होता है इंटेलिजेंस सर्वेलेंस एंड रिकॉनाइसेंस सैटेलाइट्स फॉर एक्टिव बैटलफील्ड ट्रैकिंग इसकी मदद से हमने बैटलफील्ड को ट्रैक किया ठीक है कि पाकिस्तान के कौन कौन से बेसिस डिस्ट्रॉय हुए बेसिकली हमारी सैटेलाइट्स की हेल्प से ही हम वो चीज ट्रैक कर सकते हैं क्योंकि पाकिस्तान वोंट गिव अस इंफॉर्मेशन ना कि क्या क्या डैमेज हुआ उनका Next thing is information warfare. Actively countered a massive Pakistani digital disinformation campaign. अब कोई भी wars इस टाइम पे जो prevalent होते हैं इंफॉर्मेशन वॉरफेयर इज अ मेन कंपोनेंट ऑफ देम कि दूसरी कंट्री क्या कोशिश करती है मान लो पाकिस्तान ने क्या कोशिश की थी कि डिजिटल इंफॉर्मेशन डिस इंफॉर्मेशन कैंपेन इंडिया में चलाया जाए कि कुछ नकली न्यूज इंडिया में फेक न्यूज स्प्रेड की जाए जिससे कि पैनिक क्रिएट कर दिया जाए लोगों में नाउ दिस थिंग वाज आल्सो काउंटर्ड बाय इंडिया by employing media literacy and swift factual transparency to command the global narrative. ठीक है इंडिया की तरफ से मीडिया लिटरेसी फैलाई गई थी एंड क्विक फैक्चुअल ट्रांसपेरेंसी रखी गई थी सो दैट ये जो फेक न्यूज के नैरेटिव्स हैं बाय पाकिस्तान दे शुड बी स्टॉप देयर एंड देन ओके नेक्स्ट थिंग इज कोर स्ट्रैटेजिक शिफ्ट एंड लेसन्स लर्न अब इंडिया की शिफ्ट किस चीज में आई है इंडिया की डॉक्ट्रिन कहाँ से कहाँ शिफ्ट हुई है ड्यू टू दिस ऑपरेशन फर्स्ट बाय द अटैक्स जो कि टेरर अटैक्स कैरी किए गए थे पाकिस्तान के थ्रू सेकंड इंडिया ने क्या लर्निंग्स ली उससे ये पढ़ेंगे ठीक है डॉक्ट्रिनल एवोल्यूशन एवोल्यूशन ऑफिशियली ट्रांजिशंस इंडिया फ्रॉम स्ट्रैटेजिक रिस्ट्रेंट पहली इंडिया की स्ट्रैटेजी थी स्ट्रैटेजिक रिस्ट्रेंट रखने की दैट इंडिया won't escalate to the situation that will lead to war restraint रखेगा ठीक है बट नाउ अब किसमें चेंज हो गया है टू अ प्रोएक्टिव कन्वेंशनल पॉलिसी ऑफ प्यूनिटिव डिटरेंस अब इंडिया की पॉलिसी किस पे आ गई है प्यूनिटिव डिटरेंस पे मतलब कि अगर इंडिया को पनिश करना पड़ेगा टू मेंटेन अ डिटरेंस कि वहां से वॉर ना किया जाए देन इंडिया विल पनिश देम ठीक है सो ऑपरेशन सिंदूर वाज एन एग्जांपल ऑफ प्यूनिटिव डिटरेंस पहले क्या स्ट्रैटेजी थी स्ट्रैटेजिक रिस्ट्रेंट की नाउ इंडिया हैज शिफ्टेड टुवर्ड्स प्यूनिटिव डिटरेंस ठीक है एंड डिफेंसिव ऑफेंस डिफेंसिव ऑफेंस क्या होगा कि इंडिया अपने आप को डिफेंड करेगा उस चीज में वो ऑफेंसिव भी रहेगा दैट इज योर डिफेंसिव ऑफेंस कि अगर कोई और उन पे अटैक करेगा हम पे अटैक करेगा इंडिया पे इंडिया वोंट स्टे साइलेंट एंड इट विल कंडक्ट डिफेंसिव ऑफेंस ओके इट परमानेंटली कॉल्ड द एडवर्सरीज न्यूक्लियर ब्लफ उन्होंने इंडिया ने क्या हाईलाइट किया था कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर ब्लफ भी हाईलाइट किया था इस चीज में ठीक है सेकेंड थिंग इज आत्मनिर्भर भारत आत्मनिर्भर भारत कैसे इसमें वैलिडेट हुआ था validated the success of indigenous technology like the Swati weapon locating radar. So this is an indigenous technology India ने खुद develop की है Swati weapon locating radar. Second thing is Akshatir system. Third thing is Akash air defense shield in the real combat environments. So these are some of the indigenous initiatives which India has taken up and these were showcased in this Operation Sandur also. Next, other future readiness showed an absolutely necessary to invest heavily in subterranean warfare infrastructure, underground command and control units utilizing C4I2SR. Now, this is important. इंडिया ने ये भी यूटिलाइज किया था C4I2SR. इसकी फुल फॉर्म क्या है? Command, Control, Communications, Computers, Intelligence, Information Surveillance, and Reconnaissance Systems. This you have to read. You never know अगर prelims में भी क्वेश्चन पूछ ले कि C4I2SR system is related to what फुल फॉर्म तो नहीं पूछेंगे मोस्ट प्रोबेबली तो विल आस्क कि ये किस चीज में रिलेटेड है इंडिया का कोई मिसाइल है कोई रॉकेट है कोई सैटेलाइट है यू शुड नो दिस इज अ सिस्टम ठीक है टू वेदर मॉडर्न हाइब्रिड एंड हाइब्रिड ड्रोन और मिसाइल स्ट्राइक्स ठीक है बेसिकली वॉरफेयर में यूज होता है ये सिस्टम है ठीक है बेसिकली कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशंस कंप्यूटर्स इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन सर्वेलेंस एंड रिकॉग्नाइजर सिस्टम टू वेदर मॉडर्न हाइब्रिड ड्रोन और मिसाइल स्ट्राइक्स इन सब चीजों को कॉम्बैट करने के लिए ये सिस्टम की हेल्प ली जाती है Now, the very important component of this mission was this S-400 Sudarshan Chakra layer, which was very much in news and it becomes very important from the examination point of view. अब S-400 सुदर्शन चक्र की लेयर है क्या चीज वो चीज हम पढ़ेंगे ठीक है तो S-400 is an extremely advanced surface to air missile first point is a surface to air missile है ये system developed by Russia second point अगर कोई आपको पूछे it is indigenous no it is developed by Russia हमने रशिया से प्रोक्योर किया है ये S-400 system its primary function is to neutralize airborne targets at varying distances and altitudes simultaneously.
क्योंकि ये सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है तो वेरिंग टारगेट्स को मल्टीपल टारगेट्स को साइमल्टेनियसली एंगेज कर देता है। दिस इज योर थर्ड पॉइंट दैट यू हैव टू रिमेंबर नाउ। अब इसकी रेंजेस देखते हैं क्या क्या। मैक्सिमम डिटेक्शन रेंज जो है इसकी ट्रैक्स थ्रेड्स अप टू 600 किलोमीटर अवे। सो दिस इज इम्पोर्टेंट कि ट्रैकिंग कहाँ तक कर लेता है, 600 किलोमीटर अवे तक की ट्रैकिंग कर लेता है। एंगेजमेंट रेंज, अब ये टारगेट्स को एंगेज किस रेंज तक कर लेता है, न्यूट्रलाइजेस टारगेट्स विद इन रेडियस ऑफ 400 किलोमीटर। तो ट्रैक ये कर लेता है 600 किलोमीटर तक, न्यूट्रलाइज कहाँ तक कर लेता है, 400 किलोमीटर तक न्यूट्रलाइज कर लेता है। टारगेट्स हैंडल्ड आर, किस किस चीज को ये हैंडल कर लेते हैं, कौन कौन से टारगेट्स को ये हैंडल कर लेते हैं इजीली। stealth aircraft, fighter jets, unmanned aerial vehicles, drones, and cruise or ballistic missiles. So these are some range of targets which it can handle comfortably. Now this is a photo I have inserted in this. It is a multi-layered counter drone and air defense grid. Multi-layer show की है basically इसमें. Threats are addressed by multiple overlapping layers. See this. This is the short range. Then this is your medium range. This is your long range. ऐसे चलता है इसका सिस्टम, थ्री रेंजेस में बेसिकली काम करता है। मल्टी लेयर्ड सिस्टम है, शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज, देन लॉन्ग रेंज। फिर इसकी हम लोग डिटेल्स पढ़ते हैं आज। ब्रॉड मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस नेटवर्क है ये। द S-400 इज द आउटरमोस्ट रिंग ऑफ द वाइडर सुदर्शन चक्र डिफेंस नेटवर्क। सुदर्शन चक्र एक बेसिकली नेटवर्क है, वाइडर नेटवर्क है, जिसके अंदर आपका ये जो सारा S-400 आ रहा है। इट इज अ कंपोनेंट ऑफ दैट बेसिकली, ठीक है। India's AI enabled, so this is also important that AI उसमें enabled है। Integrated command shield, integrated है ये, ठीक है। This network is layered to ensure threats are engaged at multiple distances should they bypass the initial long range shield। अगर long range shield को उसने bypass कर दे तो उसके बाद की ranges उसको tackle कर लेंगे, इसलिए मल्टीपल रेंज सिस्टम है। तो देखते हैं सबसे पहले जो टारगेट आता है वो आउटर लेयर में आता है, देन इट गोज टू द मिडिल लेयर, देन टू द इनर लेयर। ठीक है, इस सिस्टम में चलेंगे। आउटर लेयर कौन सी है इसकी, S-400 ट्रायन जो कि यूज की गई थी, जो कि न्यूज में थी। प्रोवाइड्स लॉन्ग रेंज इंटरसेप्शन कैपेबिलिटीज फॉर अर्ली डिटेरेंस। तो ये फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है डिटेरेंस का, ठीक है। नॉकिंग डाउन थ्रेट्स बिफोर दे एंटर डीप इनटू द इंडियन एयर स्पेस। पहले सुपरफिशियल लेयर में ही जब वो इंडिया के होते हैं उस टाइम पे ही काउंटरैक्ट कर देता हूँ, ठीक है। देन इज योर मिडिल लेयर। मिडिल लेयर में आपका आकाश सिस्टम आता है। हैंडल्स मीडियम रेंज थ्रेट सर्विंग एज द नेक्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस यूजिंग बोथ जॉइंट डेवलप्ड एग्जांपल बराक सिस्टम एंड इंडिजिनस एसेट्स। ठीक है, आकाश सिस्टम यूज होता है which is indigenous, then you have Barak aid system and MRSM which is your taken from the foreign countries, ठीक है। Third thing is your inner or terminal layer designed to intercept lower tier short range missiles and drones close to high value assets and population centers। अब जो भी ड्रोन्स आ गए पॉपुलेशन सेंटर्स के पास में बहुत ज्यादा इन्वेड कर गए हैं, उस चीज में हमारी इनर या टर्मिनल लेयर एक्टिवेट हो जाती है, ठीक है। पहले आउटर लेयर एक्टिवेट होगी, देन मिडल लेयर, देन द इनर। आउटर लेयर में ही मोस्टली काम आपका इजी हो जाता है बिकॉज इट न्यूट्रलाइजेस मेनी ऑफ द systems, many of the drones and whatever this missiles it has attacked, okay। इंडिजिनस अपग्रेड्स, अब इसमें इंडिया का क्या कंट्रीब्यूशन है, इंडिया ने अपनी तरफ से इंडिजिनाइजेशन कैसे की है, ठीक है। हम लोग डिफेंस में बहुत ज्यादा इंडिजिनाइजेशन करें इस टाइम पे, तो इंडिया के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। दिस इज वन ऑफ देम, प्रोजेक्ट पुश। इंडिया इज कॉन्फिडेंटली डेवलपिंग द इंडिजिनस प्रोजेक्ट पुशा। इंडिजिनस मतलब कि इंडिया में ही डेवलप हो रहा है, डोमेस्टिकली वर्क कर रहे हैं इस पे, which will work in tandem with the S-400 to further bolster long-range multi-layered interception capabilities। S-400 के साथ में मिलके ये काम करेगा लॉन्ग रेंज मिसाइल सिस्टम्स डेवलप करने के लिए, ठीक है। Now this is conclusion. I told you कि ये मेंस आंसर जैसे मैंने फ्रेम किए हैं, so you don't have to mention conclusion whenever you are giving the conclusion while writing your answers in mains, okay। कंक्लूजन क्या है, ऑप्टिमिस्टिक लाइंस पे हमेशा कंक्लूजन होना चाहिए, फ्यूचर रेडी कंक्लूजन होना चाहिए, ठीक है। Operations Sindoor acts as a watershed template for modern subconventional conflict management under a nuclear shadow। Nuclear risk भी थे इस operation में। While it successfully re-established India's threshold for tolerance against cross-border terror, इंडिया की पोजीशन को इसने बोल्स्टर किया क्रॉस बॉर्डर टेरर में। इट हाईलाइट्स emerging challenges of grey zone warfare and calls for accelerated military threat command integration, faster electronic warfare development, and robust diplomatic outreach to sustainably secure India's borders।
तो ये बेसिकली फ्यूचर रेडी आंसर है कि इंडिया को फ्यूचर में क्या क्या करना चाहिए। इंटीग्रेटेड कमांड सिस्टम्स बनाने चाहिए, इंटीग्रेटेड मिलिट्री सिस्टम्स, फास्टर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर डेवलपमेंट करनी चाहिए सो दैट हम लोग फ्यूचर रेडी रहें। ऐसे का अगर कोई अटैक फ्यूचर में होता है तो इंडिया शुड बी वेल प्रिपेयर्ड इन एडवांस टू टैकल सच इमरजेंसी सिचुएशन। ओके, now this is one UPSC prelims practice question. Let's see. Regarding operations and those, which of the following statements are correct? First of all, you have to identify the correct statements पूछिए या incorrect पूछिए. So in this question, you have to identify the correct statements and with respect to the operations and those. Let us read the statements one by one. The first statement is it was an inter-service military operation initiated in response to the Pahalgam terror attack. The statement is correct. अप्रैल में जब पहलगाम पे टेरर अटैक्स हुए थे उसके कॉन्टेक्स्ट में ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया था. दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट. Second statement is operational naming convention was strategically chosen as a direct tribute to the families and widows of the victims. कह रहे हैं कि ऑपरेशन संदूर ही बेसिकली इसका नाम क्यों रखा है क्योंकि विडोज ऑफ द विक्टिम्स को ट्रिब्यूट देने के लिए इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन संदूर रखा गया है. दिस करेक्ट स्टेटमेंट. ऑब्वियसली दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट. इट वाज वेरी वेल कवर्ड इन द न्यूज. Third thing, it marked the first time the Indian Air Force deployed indigenous BrahMos missiles exclusively via unmanned combat aerial vehicles UCAVs. BrahMos missiles deployed की थी इंडिया ने? No. BrahMos missiles नहीं deployed की थी. Yes, 400 Triumph missiles deployed की थी इंडिया ने. So this is a wrong statement. So how many statements are correct? Two statements are correct. First and second statement only. Answer is one only. So explanation is first and second are factually correct. Third statement क्यों wrong है? Third statement is incorrect because the airstrikes prominently use Rafale jets deploying Scalp and Hammer missile systems rather than exclusive UCAV-led BrahMos configuration. तो Rafale jets use किए थे, ठीक है, S-400 Triumph missiles use की गई, ठीक है. This is the thing, but BrahMos missiles नहीं use की थी. Now coming on to the second question, this is also prelims type of question. A bit difficult one, but let's try to answer this. Consider the following pairs of defense hardware and the description associated with recent operations. You know, UPSC has started asking these types of questions also now. Military में से security part में से काफी deep questions पूछे जा रहे हैं, so you should know these things. So this is a weapon or technology. You have to match the type with the type or code function. ठीक है? First is your scalp. Scalp system is a long range air launch cruise missile. ये हमने अभी पढ़ा scalp system. इसकी full form was something in French, but it is a long range air launch cruise missile. This we have read just now. So this is correct statement. Second statement is a sky striker. Sky striker is a autonomous loitering munition और kamikaze drones. जिसको हम लोग suicidal drones भी बोलते हैं. इसको हम लोग sky striker भी बोलते हैं. This is also correct. Third is your SWATI system. It is indigenous weapon locating radar. ये हमने अभी पढ़ा indigenous technologies में. This is a radar system, SWATI system. So this statement is also correct. So how many of the above pairs are correctly matched? All the three pairs are correctly matched. So C is the answer. Answer number C. Okay, so these were two prelims questions. Now this is one mains pointer कि आप इंटरनल सिक्योरिटी में क्या क्या लिख सकते हो, क्या क्या इंक्लूड कर सकते हो. ऑपरेशन संदूर को हम लोग प्रहार स्ट्रेटजी के अंडर व्यू कर सकते हो. प्रहार पॉइंट मेंशन कर सकते हो आप अगर मेंस का आंसर आपको लिखना है, ठीक है. प्रहार क्या होता है? प्रोएक्टिव होल ऑफ गवर्नमेंट डॉक्ट्रिन इंटीग्रेटिंग इंटेलिजेंस एलीट रिस्पॉन्स बाय एनएसजी एंड कॉग्निटिव नैरेटिव कंट्रोल. ये सब चीजों का इंटीग्रेशन होता है उसमें अलॉन्ग साइड एडवांस C4I2SR. इसकी फुल फॉर्म अभी पढ़िए, ट्राई सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर. दिस पॉइंट कैन बी एडेड टू फेच मोर मार्क्स, ठीक है. दिस इज अ वैल्यू एडिशन पॉइंट बेसिकली. Now this article has been done. ठीक है, hope it was clear. We'll move on to the next one, which is your India UK FTA. इंडिया और यूनाइटेड किंगडम में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, उसके रिगार्डिंग ये आर्टिकल है. PIB covered it. It is a historic and ambitious deal to boost jobs, exports, and national growth. 99% of India's exports to benefit from zero duty. Zero taxes लगेंगे 99% of India के exports पे US के through, ठीक है. कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, जीरो ड्यूटी होंगे कितने गुड्स पे? 99% of India's exports पे. Opens up massive export opportunities for labor-intensive sectors such as textiles. इंडिया के जो labor-intensive sectors हैं उनके लिए काफी अच्छी opportunity है. कौन-कौन से labor-intensive sectors? Textiles, marine products, leather footwear, sports goods and toys, gems and jewelry. And other important sectors such as engineering goods, auto parts and engines, and organic chemicals. तो ये सारे sectors benefit करेंगे इस initiative. Next क्या कह रहे हैं? Significant boost to trade in services such as IT, IAS, financial services.
Next is your professional services and other business services and educational services will also get benefited from this India-UK FTA free trade agreement. Stronger strategic alignment and greater global mobility for aspirational young Indians. Huge win with 3 years exemption from social security payment for Indian employees working in the UK. Now, one thing I need to tell you, कि ये जो agreements होते हैं, economic agreements होते हैं, कैसे फॉलो करते हैं? फर्स्ट इज योर पीटी लेवल से हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। इसमें क्या होता है कि कुछ गुड्स, सम गुड्स ओनली आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम द टैक्सेस। ठीक है, सेकंड आता है हमारा एफटीए का स्टेज विच इज अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इसमें मोस्टली ऑल द गुड्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द टैक्सेस, सिर्फ कुछ गुड्स ही होते हैं जिन पे टैक्सेस अप्लाई होते हैं। ठीक है, तो पीटीए में क्या था, पीटीए में सिर्फ कुछ गुड्स पे ही टैक्सेस एग्जेम्प्ट हैं, एफटीए में क्या है ऑलमोस्ट सभी गुड्स पे टैक्सेस एग्जेम्प्ट है। नेक्स्ट इज योर सीपा एंड सीका स्टेज। सीपा और सीका में क्या होता है, जो सर्विसेज सेक्टर है वो बेनिफिट करता है, जब हम गुड्स पे एक दिन सीपा और सीका में सर्विसेज सेक्टर की बेनिफिट आ जाते हैं। थर्ड थिंग आपका आ जाता है इकोनॉमिक यूनियन, कस्टम यूनियन एंड सच लाइक थिंग्स। इसमें क्या होता है, दैट इज अ वाइडर मतलब ग्रुपिंग कि आपकी पॉलिटिकल बाउंड्रीज एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑल गेट इंटीग्रेटेड बिटवीन द टू कंट्रीज। That thing. So, your progression you should know PTA, preferential trade agreement, then FTA, then CEPA, then your wider agreements, custom union, economic union, ठीक such type agreements. Now, coming on to the key highlights of the India-UK FTA, free trade agreements, क्या key highlights है, we'll know them one by one. First is a free trade agreement with UK is a modern, comprehensive and landmark agreement which seeks to achieve deep economic integration along with trade liberalization and tariff concessions. ठीक है, ट्रेड लिबरलाइज होगी एंड टैरिफ कंसेशंस, ऑब्वियसली टैक्स बेनिफिट्स हैं, टैक्स एग्जेम्पशंस हैं, दैट इज योर थिंग। सेकेंड ऑफ ऑल क्या कह रहे हैं, द एफटीए इंश्योर्स कॉम्प्रिहेंसिव मार्केट एक्सेस फॉर गुड्स अक्रॉस ऑल सेक्टर्स कवरिंग ऑल ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट इंटरेस्ट। इंडिया विल गेन फ्रॉम टैरिफ एलिमिनेशन ऑन अबाउट 99% of the tariff lines covering about 100% of the trade value, offering huge opportunities for increase in bilateral trade between India and UK. Bilateral trade will get benefited क्यों, क्योंकि approximately 99% जो है that those goods are exempt from tariffs. थर्ड थिंग क्या कह रहे हैं, एफटीए प्रोवाइड्स अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हमने देखा लेबर इंटेंसिव सेक्टर के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, intensive sectors and opens up export opportunities for sectors such as textile, marine products, leather, footwear, sports, food, such like important sectors. ठीक है, this you have covered first also. India will benefit from one of the most ambitious FTA commitment from UK in services such as IT और IES. Now ये services sector पे आ गए, IT services benefit करेंगे, financial services, banking services benefit करेंगे, professional services, other business services and educational services opening up new opportunities and jobs. This is the thing. Next point is FTA eases mobility for professionals including contractual service suppliers. जो mobility होती है professionals की, that also will get improvised with this agreement. Business visitors, investors, intra-corporate transferees, partners, and independent children of the intra-corporate transferees with the right to work in independent professionals like yoga instructors, musicians, and chefs. इन सब के लिए भी ये beneficial रहेगा. Next is India has secured significant commitments on digitally delivered services for Indian service suppliers, especially in professional services. Professional services में India ने काफी commitments acquired की हैं इस agreement में, such as architecture and engineering, computer-related services, and telecommunication services. These sectors will benefit. Next is the exemption of Indian workers who are temporarily in the UK and their employers from paying social security contributions. Now, this is an important point. Double contribution convention. इसमें क्या होता है कि जो एक कंपनी, मान लो यहाँ पे कंपनी खुली हुई है कोई यूके की, उन्होंने इंडिया के एम्प्लॉयज को बुला लिया है वहाँ पे। नाउ जो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स होंगे आइदर दे विल बी प्रोवाइडेड फ्रॉम इंडिया और फ्रॉम द यूके, नॉट फ्रॉम बोथ द कंट्रीज, सो दैट बर्डन ना पड़े उन पे, जो कंपनी है उस पर बर्डन ना पड़े सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स का इंडिया में भी और वहाँ पे भी। ठीक है, फ्रॉम वन प्लेस ओनली इट विल बी प्रोवाइडेड, सो दिस इज अ डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन. For a period of 3 years under the Double Contribution Convention will lead to significant financial gains for Indian services providers and enhance their competitiveness in the UK market that will create new job opportunities as well as benefit large number of Indians working in the UK. Social security भी मिल जाएगी इससे workers. Next is concessions by India. India reduces tariffs on British goods like cosmetics. इंडिया ने किस किस चीज पे कंसेशंस दी हैं इस एग्रीमेंट में यूके के प्रोडक्ट्स को? इंडिया ने दी हैं
on cosmetics, chocolates, biscuits, while slashing duties on Scotch whiskey. Whiskey पे duty slash की हैं, कहाँ से कहाँ पे आ गए हैं? From 150% down to 75%. And eventually 40% by 2035. This is a future ready goal कि 40% कर देंगे हम 2035 तक, ये इंडिया ने बोला है. Automobiles पे क्या concessions भी हैं? India will gradually reduce import duties on UK cars from up to 110% to 10% over 5 years under the quota-based liberalization framework. 110 से हम लोग 10% पे आ जाएंगे 5 years में. ठीक है? Now, India has ensured that non-tariff barriers are suitably addressed. एक तो टैरिफ बैरियर्स होते हैं जो कि आपके टैक्सेशन के बैरियर्स होते हैं, दूसरा होता है नॉन टैरिफ बैरियर्स. नॉन टैरिफ बैरियर्स में आ जाते हैं आपके सैनिटरी फाइटोसैनिटरी मेजर्स एंड सच लाइक मेजर्स. ठीक है. India has ensured that non-tariff barriers are suitably addressed to ensure free flow of goods and services and that they do not create unjustified restrictions to India's exports. Because CBAM भी आपका नॉन टैरिफ बैरियर है, कार्बन बॉर्डर एडजस्टेड मैकेनिज्म जो है दैट इज अ नॉन टैरिफ बैरियर, ये यूरोपियन यूनियन इम्पोज करता है. नेक्स्ट, FTA seeks to promote good regulatory practices and enhance transparency that are in sync with India's own focus on domestic reforms to enhance the ease of doing business. Okay, so ease of doing business इससे enhance हो जाएगा. Next is underlying concerns and structural friction points. As I've told you, this is a means ready perspective. ये आपकी कुछ key highlights हैं. If a question comes कि India UK agreement के बारे में कुछ बताओ, FTA के बारे में put a light on India UK FTA that has been signed recently. तो ये कुछ key highlights है. Then you have to go towards the concerns कि कहाँ कहाँ पे concerns और friction points आ सकते हैं. So some points are related to that. Data governance and infrastructure. Clauses pushing for open access to government data sets. In open access मांग रहे हैं वो गवर्नमेंट की डेटा सेट्स का. कौन? यूके. Potentially diminish national autonomy over indigenous data crucial for domestic AI training models. तो बेसिकली इंडिया की पॉलिसी रहती है कि जो भी डेटा वो इंडिया में ही प्रोसेस हो, इंडिया के बाहर ना जाए. बट दे आर आस्किंग फॉर ओपन एक्सेस टू द गवर्नमेंट डेटा सेट्स. So this can be one friction point between India UK FTA. Second point is widening trade deficit. Concessions on high-value British imports, machinery, medical equipment is slowing the trade balance given India's exports remain low margin and volume heavy. इंडिया के एक्सपोर्ट्स अभी भी उतने ज्यादा नहीं है जितने कि यूके के एक्सपोर्ट्स हैं इंडिया में, विच इज लीडिंग टू अ ट्रेड डेफिसिट. ठीक है, तो इंडिया का ट्रेड डेफिसिट इससे वाइडन हो सकता है, हमने भी क्योंकि उनको कंसेशन दिए हैं स्टील में. Next point is public procurement access, granting the UK partial access to government tenders with 20 to 50% local value addition KPI might conflict with local priorities of the Make in India industrial policy. तो कुछ कंपनीज को यहाँ पे एक्सेस मिल गया है यहाँ पे आके प्रोडक्शन करने का, which can hamper the Make in India policy. Next is agricultural and rural vulnerabilities. Even with sensitive exclusions like dairy को हमने exclude कर दिया बीज डील से, but still secondary market success for specific Western agri produce creates a baseline threat for domestic marginal farmers operating on high input costs. तो हमारे farmers को इस चीज से अभी भी खतरा है. Next, way forward क्या हो सकता है? इसमें हमें पॉइंट्स देने हैं, न्यूट्रल पॉइंट्स दैट कैन हेल्प इन बेनिफिटिंग इंडिया इन द लॉन्गर रन. तो इस चीज पे हमें फोकस करना होता है वे फॉरवर्ड में. अगर कोई इंटरनेशनल रिलेशंस का क्वेश्चन है कि हाउ कैन इंडिया बेनिफिट इन द लॉन्गर रन. ठीक है. To maximize the dividends of this high standard trade impact, India must implement institutional structural reforms. What reforms must India implement? Firstly, utilize the 2027 midterm review to synchronize digital trade parameters with the DPDP Act. डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट को अच्छे से सिंक्रोनाइज करना चाहिए, सो दैट हमारी जो डेटा वाली प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सके. Next thing is establish state-backed compliance portals to help MSMEs overcome rigorous UK sanitary and phytosanitary non-tariff barriers. ठीक है, तो ये नॉन टैरिफ बैरियर्स को ओवरकम करने के लिए कुछ उनको स्टेप्स लेने चाहिए. थर्ड थिंग इज create a dedicated tracking mechanism to improve India's low FTA utilization rates by streamline custom procedures. जो इंडिया का ट्रेड डेफिसिट आ रहा है अभी तक, उस चीज को ट्रैक करने के लिए डेडिकेटेड ट्रैकिंग मैकेनिज्म्स बनाने चाहिए एंड देन यू शुड वर्क अपॉन देम अकॉर्डिंगली. So this is some one or two lines in the conclusion. This you can write as your penultimate conclusion, and this is your ultimate conclusion if you have time and space to write. Okay, as two leading democracies and global innovation hubs, India and the UK reaffirmed their commitment to strengthening economic cooperation and working together to address the global challenges. The India-UK FTA sets a new benchmark to fair, ambitious, and modern trade agreements worldwide.
This can be added in the end. Okay. Now let's look at a film's practice question. With reference to free trade agreement between India and UK, consider the following statements. You have to identify which of the statements are correct. Okay. So two statements हैं. First statement, it will increase exports of goods and services from India to UK. Obviously, it will increase the exports because 99% of goods पे उन्होंने tariffs exempt कर दिए हैं. तो Indian exporters will be motivated to export more to the UK. Second point, the imports from UK could lead to job losses in some sectors in India. Is this point correct? कि job losses हो सकते हैं import से UK के, obviously हो सकते हैं. This point is also correct. Why? Because in अभी बताया ना, मेक इन इंडिया विल गेट हैम्पर्ड. यूके की इंडस्ट्रीज यहाँ पे आके सेट होंगी, अगर वो ज्यादा कॉम्पिटिटिव हुई हमारी इंडस्ट्रीज से, अवर मार्केट विल गेट अफेक्टेड बाय दिस. So job losses can occur in some sectors in India. So this is also a correct statement. So both the statements are correct. Answer is C. Now this is a mains question. You have to try to attempt this question. ठीक है, IR के basically आपके mains में काफी questions आते हैं analysis based. So this is a question. Make sure you write it down based on what you have read in this article. If you can gather some more important information, you can add that too. Okay, so the question is the recently finalized India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement CETA represents a paradigm shift in India's post-Brexit strategic alignment with Western economies. Critically evaluate the economic and strategic significance of India for this deal while highlighting the underlying domestic and sovereignty concerns. तो बेसिकली आपको इंपॉर्टेंस बतानी है इस डील की, जो कंसर्न्स हैं चैलेंजेस हैं वो हाईलाइट करने हैं, देन लास्ट में आपको वे फॉरवर्ड लिखना है इन द कंक्लूजन पार्ट. कंक्लूजन मस्ट ऑलवेज रिफ्लेक्ट अ वे फॉरवर्ड एंड ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच. सिर्फ चैलेंजेस लिख के नहीं छोड़ना. ठीक है, सो 250 वर्ड्स में आंसर करना है. 15 मार्क के क्वेश्चन है. डू राइट. Now this article was clear. We'll move on to the next article now, which is about PM Janman, which is a scheme. ठीक है, अभी देखते हैं. इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए. पीएम जनमन की स्कीम की प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाभियान. ठीक है, बेसिकली इट इज फॉर आदिवासी, बेसिकली फॉर पीवीटीज, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के लिए ये स्कीम है. ट्राइबल ग्रुप्स में भी जो पर्टिकुलरली वल्नरेबल होते हैं उनके लिए. कितने हैं इस टाइम पे इंडिया में? वी हैव 75 PVTGs as of now in India. Okay, this is an important point क्योंकि इस ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है यूपीएससी का कि इंडिया में कितने पीवीटीजीज हैं. अगर कोई कम्युनिटी न्यू एड ऑन होती है, यू शुड कीप अ ट्रैक ऑफ दैट, दैट कम्युनिटी बिकम्स इम्पोर्टेंट. ओके, अब ये पीआईबी के आर्टिकल को देखते हैं, कवर करते हैं इसमें क्या कहा गया है. पीएम जनमन स्कीम, पीएम प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान, स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स बिकम्स इम्पोर्टेंट. किसके अंडर आती है ये मिनिस्ट्री? कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स. तो यू शुड नो कि अगर शॉर्ट फॉर्म भी आ जाए पेपर में कि पीएम जनमन इज अ स्कीम ऑफ विच मिनिस्ट्री, so you should be able to identify that it is a scheme of Ministry of Tribal Affairs being implemented since 2024. So this is also important point. This scheme जो थी, this was launched in 2023 but it got implemented in 2024. Aims to enhance the socio-economic conditions of PVTGs, particularly vulnerable tribal groups की social and economic conditions को enhance करता है by providing them with basic facilities such as what basic facilities does the scheme provide? Safe housing, clean drinking water, improved access to education, health and nutrition, road and telecom connectivity, electrification of an unelectrified households, and sustainable livelihood opportunities. Basically working on all-round development of the PVTGs. कहाँ से ड्रिंकिंग वाटर से लेके उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज तक सब कुछ प्रोवाइड करने की इसमें प्रोविजंस दिए गए हैं स्कीम में. ओके, द स्कीम फोकसेस ऑन 11 critical interventions related to 9 key ministries. This is also important. 9 key ministries, 11 key interventions. Ministries including Ministry of Skill Development and Entrepreneurship to make them employable in the job market. The key intervention is the MSTE is facilitating skill and entrepreneurship development in the Vandhan Vikas Kendras. Now these become important कि उनको employment और skill development कहाँ पे दी जा रही है. Vandhan Vikas Kendras बनाए हैं इसके लिए. For that very purpose these are being utilized. अब आपको क्वेश्चन आ सकता है कि Vandhan Vikas Kendras किस पर्पस के लिए यूटिलाइज करें. तो बेसिकली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए यूज किए जा रहे हैं. ठीक है. Next thing, the ministry through its autonomous institutions, namely Institute for Entrepreneurship and Small Business Development and Indian Institute of Entrepreneurship, is implementing the skilling entrepreneurship component of the PM Jan.
बेसिकली इन दोनों इंडस्ट्रीज को कंबाइन करके जो स्किलिंग का इनिशिएटिव है वो कैरी किया जा रहा है विद द सपोर्ट ऑफ ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ट्राइफेड ने भी सपोर्ट किया in 15 states right now across the country under which a total of 500 VDVKs, these Vandan Vikas Kendras are to be operationalized by 31st of March 2026 covering 41,000 VDVK members. तो इतने मेंबर्स को दिए जा रहे हैं 500 VDVKs एस्टैब्लिश किए वंदन विकास केंद्र एस्टैब्लिश किए 15 स्टेट्स में एस्टैब्लिश so this is important. Now I give you some background information that what are the PVTGs, what they call them basically PVTGs. In 1973, the Debar Commission, this is important, 1973 में Debar Commission established PTGs. PTGs क्या होते हैं? Primitive tribal groups established किए गए as a distinct category encompassing tribal communities characterized by declining or stagnant population. The use of ये बेसिकली क्राइटेरिया है कि किसके बेस पे हम लोग किसी भी कम्युनिटी को पीवीटीजी डिक्लेयर करते हैं पीवीटीजी के क्राइटेरियाज हैं फर्स्ट इज एनकम्पासिंग ट्राइबल कम्युनिटी characterized by declining or stagnant population this is number one first point कि उनकी population either should be declining or should be stagnant second point is the use of pre-agrarian technology third point is इकोनॉमिक बैकवर्डनेस फोर्थ पॉइंट इज लो लिटरेसी ये बेसिकली चार पॉइंट्स हैं जिनकी मदद से हम लोग पीवीटीजीज को आइडेंटिफाई करते हैं these groups are identified as less developed among the tribal communities in 2006 the government of india renamed the ptgs किसने आइडेंटिफाई किया था लेबर कमीशन ने लेबर कमीशन ठीक है ptgs आइडेंटिफाई किए थे अब 2006 में उसकी रीनेमिंग हो गई आज pvtgs they reside in remote and inaccessible areas facing challenges due to poor infrastructure and administrative support. Next point, there are 75 PVTG communities spread across 18 states and union territories in India. Okay, this you should know 75 and 18 states के across is spread. Odisha has the highest number of PVTGs. This also is an important point कि सबसे ज़्यादा कहाँ पे ओडिशा में है, followed by Andhra Pradesh 12. Then you have Bihar and Jharkhand combined. First one is your Odisha, second one is your Andhra Pradesh, third is Bihar and Jharkhand combined. Then you have Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Tamil Nadu, Kerala and Gujarat. The rest of the communities are spread across Maharashtra, West Bengal. These are the other states, basically 18 states में ये spread out है. All four tribal groups in Andaman, this is also important point कि अंडमान में जितने भी चारों के चारों tribal groups हैं they and one in the Nicobar Islands are recognized as PVTGs. Okay. Now, what is the PM Janman scheme? Something about this is a government scheme that aims to bring tribal communities into the mainstream. Mainstream में लाने की गई है. Scheme is comprising of the central sector and centrally sponsored schemes. दोनों एथनीज में central sector as well as centrally sponsored schemes will be implemented by Ministry of Tribal Affairs. We have read this in collaboration with the state governments and the PVTG communities. The scheme will concentrate on 11 critical interventions by 9 ministries, ensuring implementation. Next, it encompasses various sectors including safe housing. Safe housing कहाँ पे आती है? PMFRs के अंदर आती है. Clean drinking water, healthcare, education, nutrition, telecommunication, connectivity, opportunities for sustainable livelihoods. Next, the plan also includes the establishment of, again, this is important, Vandan Vikas Kendra as we have read, for trading in forest produce. इसमें इनकी skilling करवाएंगे. Also, off-grid solar power systems for 1 lakh houses and solar street lights. These will also be included. The scheme is expected to enhance the quality of life and well-being of the PVTGs by addressing the multiple and intersecting forms of discrimination and exclusion. Basically, discrimination और exclusion face करते PVTGs उस चीज को better करने के लिए कि वो चीज को हम लोग combat कर सकें. The scheme has been introduced and by recognizing and valuing their unique and valuable contribution to the national and global development. Next, what are the challenges in implementation of the scheme? First challenge is the lack of current data on PVTGs is a significant challenge. कि data ही नहीं है PVTGs पे कि उनकी population कितनी है. As the last available census data for PVTGs is from 2001, which counted a total of around 27.6 lakh individuals belonging to these communities. इसके बाद में census में इनकी community को record नहीं किया गया. Second point, Ministry of Tribal Affairs has started conducting baseline surveys, but an accurate and current data set of PVTG populations is yet to be compiled. अभी भी कोई अच्छा डेटा सोर्स हमारे पास नहीं है इनकी पॉपुलेशन को ग्रास्प करने के लिए कि बेसिकली कितनी पॉपुलेशन है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो द पॉपुलेशन. उसके बाद में उसके अकॉर्डिंगली हमारी जो स्कीम्स हैं दे विल बी इम्प्लीमेंटेड फॉर देम.
ठीक है, हमें पॉपुलेशन ही नहीं पता होगी, then how will we implement the schemes at those levels? Okay. Next thing is the complexity and diversity of the needs and capacities of the PPTGs across different regions and states, and the need for customizing flexible approaches and intervention. So one size fit all approaches में नहीं यूज कर सकते हम लोग, flexible approaches रखनी पड़ेंगी क्योंकि इनका जो हमारा रहना सहना that is very different from the other people of our country. Okay. Now this is the map of India. 75 total groups हैं PVTGs के, इसमें highlight किए गए हैं. See the most PVTGs कहाँ पे हैं, ये communities दी गई हैं, कौन कौन से ओडिशा में हैं. You can read about them, go through them, just go through them. Okay. आंध्र प्रदेश में, then बिहार and झारखंड. तो most of your communities are in ओडिशा. फर्स्ट नंबर पे ओडिशा आता है, वहाँ पे सबसे ज्यादा PVTGs हैं, followed by आंध्र प्रदेश, thirdly followed by बिहार and झारखंड combined. ठीक है. Next, this is a question which has already come in the UPSC examination related to the PVTVs, which makes this article and the scheme important. PM General Scheme भी इसीलिए important है क्योंकि PVTVs का already article question आ चुका है UPSC में. Okay, so 2019 का question है. Let's read this question. Consider the following statements about PVTVs. PVTVs reside in 18 states and 1 union territory. Is this statement correct? 18 states or 1 union territory में reside करते हैं. Obviously, yes. We have read this just now. The second statement is a stagnant or declining population is one of the criteria for determining PVTG status. Four हमने criteria identify किए हैं जिसमें कि stagnant or declining population is the first criteria. So yes, this is the criteria for determining PVTG status. First statement is there are 95 PVTGs officially notified in the country so far. 95 notify हो गए? No. Statement is wrong. कितने हैं अभी तक हमारे पास में? 75 हैं. Fourth statement is irregular and Kondaredi tribes are included in the list of PVTGs. This statement is also correct. These tribes were in news जब ये question आया था 2019 में. So जो भी tribes आपकी PVTG से related news में हैं, go through them quickly. Okay. So three statements are correct in this question. First, second, and fourth statements are correct. So the answer becomes C. First, second, and fourth statements are correct. Hope this is clear. Now we'll come on to the last article for the day, which is your National Green Hydrogen Mission. Another very important article from the science and technology point of view. इस पे question आते ही रहते हैं. इसमें इस बार भी एक question है, 2026 में भी question है. I'll show you. Okay, so the Ministry of New and Renewable Energy participates in World Hydrogen Summit 2025 में हुआ था, उसमें participate किया था. Highlights India's vision and capabilities in renewable energy and green hydrogen. अब देखते हैं, इस वजह से ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है. ठीक है, अब देखते हैं टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन होती क्या क्या है, फिर हम लोग आएंगे ग्रीन हाइड्रोजन क्या होती है. फर्स्ट वी शुड नो द अदर टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन एज वेल. ओके, तो बेसिकली ये हाइड्रोजन के प्रोसेस पे डिपेंड करता है उसका कलर कौन सा है. हमने कलर कोडिंग कर दी है हाइड्रोजन की बेस्ड ऑन व्हाट प्रोसेस हाइड्रोजन इज बीइंग एक्सट्रैक्टेड. ठीक है, हमें हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट करने किसी भी प्रोसेस से हम एक्सट्रैक्ट करेंगे उसको हमने कलर कोडिंग दी है अलग अलग प्रोसेसेस को डिफरेंशिएट करने के लिए. So let's see. First is your black or brown hydrogen. किस प्रोसेस के थ्रू करते हैं हम? कोल गैसिफिकेशन से ये बनती है. सोर्स क्या होता है इसका? कोल. कोल की जब गैसिफिकेशन होती है तब जो हाइड्रोजन बनती है दैट इज योर ब्लैक और ब्राउन हाइड्रोजन. दिस इज वेरी पोल्यूटिंग इन नेचर क्योंकि कोल बर्न करके बनी है. दैट इज अ पोल्यूटिंग सोर्स. ठीक है, बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है इस प्रोसेस में. Next, coming on to the gray hydrogen, this is also very important. You should remember what gray hydrogen is. If at all, you must remember gray hydrogen, green hydrogen. वैसे तो सबके सब आपको पता होने चाहिए, but gray and green are the most important ones. Okay? So gray hydrogen is produced from methane reformation, natural gas से बनती है ये. Is also most widely formed. अभी इंडिया में जो सबसे ज्यादा फॉर्म हो रही है वो ग्रे हाइड्रोजन है. इसके भी कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस होते हैं. Next is your blue hydrogen. Blue hydrogen is formed from the fossil fuels, coal gasification and methane reformation with CCUS, carbon capture and storage से फॉर्म होता है. ठीक है. Then is a turquoise hydrogen, ये फॉर्म होती है मीथेन से pyrolysis के थ्रू. Pyrolysis is a heat reaction. उसके थ्रू हमारी जो बनती है that is a turquoise hydrogen. ये आप कल साथ में देख लो, जैसे black और brown, grey, blue, turquoise hydrogen. Then is a pink hydrogen. It is formed from nuclear energy. Nuclear energy से जो बनेगी that is a pink hydrogen. Now coming on to the green hydrogen, which is very, very important. This comes from the renewable energy. Electrolysis या biomass gasification से produce होता है. Renewable energy से बनती है. Basically hydrolysis का process क्या होता है? Water होता है, उसमें से हम लोग
इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं हाइड्रोलाइसिस। वाटर की ब्रेकडाउन बाय इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू जो हम लोग वाटर का ब्रेकडाउन करें, दैट इज नोन एज योर इलेक्ट्रोलाइसिस, देन वी गेट हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ठीक है। Now, the National Green Hydrogen Mission is an Indian government initiative launched in 2023. Another important year, 2023 में launch हुआ था National Green Hydrogen Mission with an initial outlay of rupees 19,744 crore. Not so important. Next, its overarching goal is to make India a global hub for गोल क्या है इस प्रोजेक्ट का, इंडिया को क्या बनाना है, ग्लोबल हब बनाना है प्रोडक्शन का, यूसेज का, एक्सपोर्ट का, ग्रीन हाइड्रोजन का, बाय टारगेटिंग, क्या टारगेट है, दिस इज इम्पोर्टेंट, targeting an annual production capacity of at least 5 million metric tons by 2030. Very important. तो 5 million metric tons की capacity को target कर रहा है 2030 तक. ठीक है. Now what are the core targets by 2030? अब इसमें से question आया इस पर UPSC का. Production capacity at least 5 million metric ton of green hydrogen per year, ये हमने अभी पढ़ा. ठीक है, by 2030. और क्या करना है 2030 के 2030 तक हम. ठीक है. Renewable energy addition, approximately 125 gigawatt of new renewable energy capacity by green hydrogen. Third thing is your investment in jobs leverages over rupees 8 lakh crore in total investments and is projected to create over 6 lakh jobs. Okay. Next is your emissions and imports. Avoids nearly 50 million metric tons of annual greenhouse gas emissions and reduces coal fossil fuel imports by more than 1 lakh crore. The question I have. Emissions on imports, it averts nearly 50 million metric tons of annual greenhouse gas emissions. इतने मिलियन मेट्रिक टन को ये अवॉइड कर देगी, मतलब इतने नहीं होंगे अगर ग्रीन हाइड्रोजन की कैपेसिटी हम लोग डेवलप कर लें बाय 2030. दिस वाज अ क्वेश्चन दैट केम इन यूपीएससी एज अ स्टेटमेंट दिस ईयर 2026 में आया है. ठीक है. नाउ व्हाट आर द की कंपोनेंट्स एंड पिलर्स ऑफ द स्कीम. फर्स्ट इज योर साइट स्कीम, इंपॉर्टेंट स्कीम. मिशन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी जो सब स्कीम्स है दे आर आल्सो इंपॉर्टेंट. Now, the side scheme की full form क्या है? Strategic Interventions for Green Hydrogen Transition Program utilizes the bulk of missions budget. bulk जो है मिशन का इसी में जा रहा है बजट का, to provide financial incentives for domestic electrolyzer manufacturing and green hydrogen production. हमें electrolyzers चाहिए, electrolyzers to break down your water via electricity. तो electrolyzer को domestically manufacture करने के लिए जो मिशन है, that is your sites. ठीक है. Next is green hydrogen hubs. Coastal areas in specific states are being developed as integrated centers for large-scale production, consumption, and export. Example: major ports like Deendayal, Chidambaram, and Paradip Port. ये सारे ports हैं जिनको हम green hydrogen hubs की तरह use करेंगे, वहाँ पे हम लोग establish करेंगे. Third is your certification scheme. The Green Hydrogen Certification Scheme of India provides a standardized national framework to certify hydrogen as truly green. ट्रूली ग्रीन कैसे सर्टिफाई करेंगे? बेस्ड ऑन द लाइफ साइकिल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस. ग्रीन हाउस गैस एमिशंस के लाइफ साइकिल को देख के हम लोग उसको ट्रूली ग्रीन सर्टिफाई कर देंगे. ठीक है. नेक्स्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस. कंप्लीटली वेज इंटरस्टेट ट्रांसमिशन some charges for 25 years and exempts production plants from compulsory prior environmental clearances. तो अभी के लिए environmental clearances नहीं चाहिए. ease of doing business को maintain करने के लिए we are promoting the project to be developed in a smooth manner. तो ये स्टेप दिए गए हैं. Now, phased implementation of these projects की कौन-कौन से phases में? First phase is 2022, 23 to 25, 26. अभी ये वाले phase में हम लोग focusing on creating demand in existing sectors. कौन से existing sectors में हम लोग demand create करें green hydrogen की? Refineries, fertilizers, city gas distribution and scaling up domestic electrolyzer manufacturing. तो ये aims है first phase में. इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चरिंग को भी स्केल अप करना है. ये सेक्टर्स में हमें डिमांड क्रिएट करनी है. रिफाइनरीज, फर्टिलाइजर, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन. सेकंड फेज इज, तो ये जो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन में मीथेन यूज हो रही है दैट कम्स फ्रॉम योर ग्रे हाइड्रोजन इन सम ऑफ द एरियाज. ठीक है. ग्रे हाइड्रोजन अभी मोस्ट प्रेवलेंट है इंडिया में. ग्रीन हाइड्रोजन इतना ज्यादा नहीं है बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक कॉस्ट. अभी इतना ज्यादा फीजिबल नहीं है इकोनॉमिकली इंडिया को ग्रीन हाइड्रोजन में शिफ्ट करने में. वो हम चैलेंजेस में पड़ेंगे. Next phase, second phase is 2026, 27 to 29, 30. This is aimed at making green hydrogen cost competitive with fossil fuels and expanding its use to new sectors like steel, shipping and aviation. अब इन sectors में भी हमें shift होना है. पहले सिर्फ ये वाले sectors covered थे. अब second phase में हमें इन sectors में भी shift होना है green hydrogen के through. Now, what are the key challenges? First is high production cost.
Clean hydrogen remains significantly more expensive than fossil fuels grey hydrogen, often exceeding competitive market parity without subsidy. तो ग्रे हाइड्रोजन हमें सस्ता पड़ रहा है अभी, अगर सब्सिडीज नहीं होंगी तो ग्रीन हाइड्रोजन हमें बहुत ज्यादा महंगा पड़ रहा है. ठीक है. नेक्स्ट, टेक्नोलॉजिकल एंड सप्लाई चेन बॉटलनेक. सप्लाई चेन में क्या बॉटलनेक्स हैं? देयर इज हेवी रिलायंस ऑन इंपोर्टेड कंपोनेंट्स, एग्जांपल मेम्ब्रेन्स, कैटलिस्ट एंड रेयर अर्थ मिनरल्स. तो जो हमें इलेक्ट्रोलाइजर्स के लिए कंपोनेंट्स चाहिए, हमारी काफी ज्यादा हेवी रिलायंस है उसके लिए इंपोर्ट पे. फॉर इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चरिंग लीविंग स्केलेबिलिटी वनरेबल. अगर हमारी किसी चीज के लिए इंपोर्ट्स पे डिपेंडेंस है तो हम लोग उसमें बहुत ज्यादा स्केल अप नहीं कर पाएंगे. ठीक है, डोमेस्टिक स्केल अप उसमें करना बहुत ज्यादा feasible नहीं होगा. ठीक है. Third thing is that infrastructure deficits. A lack of specialized networks for safe transportation, intermediate storage and distribution limits widespread adoption. अभी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का नेटवर्क इतना ज्यादा नहीं है, इसलिए इसकी वाइड स्प्रेड अडॉप्शन नहीं हो रही है. Fourth is your regulatory uncertainty. Unclear classification of hydrogen within industrial categories and Texas ambiguities complicate the project financing and approval. अभी तक जो सारी टर्मिनोलॉजीज हैं वो क्लियर नहीं है इंडस्ट्रियल सेगमेंट में, जिसकी वजह से रेगुलेटरी अनसर्टेनिटीज हैं. अब इसका वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है? चैलेंजेस को ओवरकम कैसे कर सकते हैं? यू विल ऑलवेज हैव टू मेंशन वे फॉरवर्ड. फाइनेंशियल इंसेंटिव्स प्रोवाइड करो. Expand government-backed financial support such as production-linked incentives, which is known as PLI, to bridge the cost gap with grey hydrogen. ग्रे हाइड्रोजन के साथ में अगर कॉस्ट गैप ब्रिज करना है तो हमें सब्सिडीज देनी पड़ेंगी, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स देने पड़ेंगे, क्योंकि अभी ये डेवलपमेंट के स्टेज में ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट. नेक्स्ट इज सर इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग. इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग हमें एडवांस करनी कैसे? लोकल रिसर्च करो, डेवलपमेंट करो, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइजर्स. बेसिकली यही चाहिए ना हमें ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने के लिए, इलेक्ट्रोलाइजर्स चाहिए. To reduce the import reliance on drive down the long term capital expenditure. इंपोर्ट को कम करने के लिए एंड डोमेस्टिक हमारी कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग हमें इंक्रीज करनी है. Infrastructure development. Invest in pipeline, storage hubs and port facilities while standardizing safety and handling protocols. ये सब चीजों में भी आपको इन्वेस्ट करना है. हैंडलिंग प्रोटोकॉल्स में क्यों इन्वेस्ट करना है? क्योंकि हाइड्रोजन इज अ हाईली फ्लेमेबल गैस, बहुत जल्दी आग पकड़ लेती है. तो हैंडलिंग प्रोटोकॉल्स भी आपको डेवलप करने पड़ेंगे टू अवॉइड एक्सीडेंट्स. Now coming on to a prelims practice question. With reference to National Green Hydrogen Mission, consider the following statements. You have to tell which of the above statements are correct. Let's see the statements one by one. First statement, the mission aims to establish India as a global hub for production, utilization and export of green hydrogen and its derivatives. So यही है mission का aim. Okay, so this is the correct statement. Second statement, it targets a green hydrogen production capacity of at least 10 million metric tons per annum by 2030. 10 MMT की प्रोडक्शन टारगेट करेंगे 2030 तक. दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट. कितनी प्रोडक्शन टारगेट करें हम लोग? 5 मिलियन मेट्रिक टन की प्रोडक्शन टारगेट करें. वी हैव कवर्ड दिस जस्ट नाउ. सो द स्टेटमेंट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट. सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग. नाउ कमिंग ऑन टू द थर्ड स्टेटमेंट, the site scheme strategic intervention for green hydrogen transition program is a key component of this mission. Yes, we have read about this right now. Yes, this is a key component. Fourth is the mission aims to facilitate the transition of industrial, transport, and energy sectors to a lower carbon economy. इसीलिए हम लोग green hydrogen की तरफ जा रहे हैं so that we can have a lower carbon economy. So this statement is also correct. First, third, and fourth statements are correct. We have option B as the correct answer. Why is the second statement incorrect? क्योंकि 5 million metric tons की production को हम लोग अभी target कर रहे हैं, not 10 million metric tons. Now this is the main question which you have to attempt. Try to attempt this question based on the article. ठीक है, कोई extra information मिलती है वो भी आप add on कर सकते हैं, but try to attempt this question. While the National Green Hydrogen Mission is a critical step towards achieving India's net zero transmissions and ensuring long-term energy security, realizing its full potential faces significant technological and infrastructural hurdles. बेसिकली challenges आपको highlight करने, कौन से challenges face कर रहे हैं अभी हम. Critically examine the challenges involved in scaling up green hydrogen production and discuss the strategic interventions required to make India a global hub in the sunrise sector. Sunrise sector होता है जो इंडस्ट्री अभी राइज अप कर रही है, जिसकी अभी बूम आने वाली है. तो attempt this question, write down the key challenges we are facing in the National Green Hydrogen Mission as of now and how we can overcome them. Challenges and way forward, यही डिस्कस किया है अभी. ठीक है, attempt this question 15 mark के 250 words. Okay. So this was all about the important articles, PIB articles, which were covered in the month of May 2025. I'll be coming up with more sessions. ठीक है, बाकी के months भी हम लोग cover करेंगे ऐसे.
जो जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स होंगे विल कवर देम वन बाय वन। ठीक है, आई होप दिस सेशन वाज वेरी वेल क्लियर टू यू। कोई भी आपको डाउट्स होंगे तो यू कैन मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।